गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो चलते स्टार्ट करवा आज क्लास। किछि दिन हेलानी क्लास आसी नथिला ड्यू टू सम प्रॉब्लम, तो देरी न करी क्लास स्टार्ट करवा। ता पूर्व ए वीडियो को लाइक और शेयर करदेव और चैनल को सब्सक्राइब करदेव। फर्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन दैट इज सुइटेबल फॉर सिग्मोइडस्कोपी इज ऑप्शन सुपाइन, नी चेस्ट, लेफ्ट लैटरल पोजीशन ना बोथ बी एंड सी। तो आर आंसर कौन हम? सिग्मोइडस्कोपी रो को पोजीशन देव, तो आर आंसर हूँ आमर ऑप्शन डी, जोटा कि आमर बोथ बी एंड सी। आमर बोथ लेफ्ट लैटरल आउ नी चेस्ट पोजीशन आमर सिग्मोइडस्कोपी रे दिया हुए, तो आर आंसर हूँ बोथ बी एंड सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूवल एंड एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस इज नोन एज कल्चर, बायोप्सी, सोनोग्राफी ना एमआरआई। तो आमर कौन? रिमूवल एंड एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस इज नोन एज, आर आंसर कौन? आर आंसर हूँ आमर ऑप्शन बी, बायोप्सी। बायोप्सी इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ द टिश्यू फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एंड डायग्नोसिस। Then next question, term thoracentesis refers to the option puncture in the pleural cavity for removing pleural fluid or air, option B removal of fluid from the peritoneal cavity, option C aspiration of CSF from lumbar region, option D inflammation of thorax and abdomen। तो आर आंसर कौन हम? आर आंसर हूँ आमर puncture into the pleural cavity for removing pleural fluid and air। Thoracentesis is performed to remove pleural fluid or air from the pleural cavity। The next question, term abdominal paracentesis refers to option puncture into the pleural cavity for removing pleural fluid or air, option B removal of fluid from the peritoneal cavity, option C aspiration of CSF from lumbar region, option D inflammation of thorax and abdomen। तो आर आंसर कौन हम? आर आंसर हूँ रिमूवल ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी। एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस मीन्स इज रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, term lumbar puncture refers to puncture into the pleural cavity for removing pleural fluid or air, option B removal of fluid from the peritoneal cavity, option C aspiration of CSF from lumbar region, option D inflammation of thorax and abdomen। term of lumbar puncture refers to, our answer होची आमर option C aspiration of CSF from lumbar region। lumbar puncture is performed to obtain CSF from the lumbar subarachnoid space। Then next question, purpose of the thoracentesis is option to study the chemical, bacteriological and cellular composition of the pleural fluid, option B to remove pleural fluid, option C to relieve lung compression, pain and respiratory disorder, option D all of the above। तो आर आंसर कौन? thoracentesis पर्पज कौन? तो आर आंसर होची ऑल ऑफ द एबव। thoracentesis has the both diagnostic and therapeutic purpose। The next, most common site for pleural aspiration, ऑप्शन को है at the second intercostal space, option B at the fourth intercostal space, option C at the eighth intercostal space, option D it can perform एनीवेयर। तो आर आंसर कौन? आमर प्लूराल एस्पिरेशन जो हुए को साइड रे हुए, तो आर आंसर होची ऑप्शन सी, जोटा कि आमर 8th इंटरकोस्टल स्पेस। प्लूराल फ्लूइड एस्पिरेशन इज कॉमनली परफॉर्म्ड अराउंड द 8th इंटरकोस्टल स्पेस डिपेंडिंग ऑन फ्लूइड लेवल एंड इमेजिंग गाइडेंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्पज ऑफ एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस आर एक्सेप्ट, ऑप्शन है to study the bacteriological and cellular composition of the peritoneal fluid, option B to remove exert peritonitis, option C both A and B, option D removal of pleural fluid। तो आर आंसर कौन? आर आंसर होची to remove pleural fluid। Paracentesis concern the peritoneal cavity whereas pleural fluid is removed by thoracentesis। Then next question, most common site used for abdominal paracentesis is, ऑप्शन को है at umbilicus, option B symphysis pubis, option C midway between the symphysis pubis and umbilicus on the midline, option D just below the symphysis pubis। आमर जो abdominal paracentesis हुए सेटा को साइड रे हुए, तो आर आंसर होची आमर ऑप्शन सी, जोटा आमर midway between the symphysis pubis and umbilicus on the midline।
This is the commonly described site for assessing the peritoneal cavity while minimizing injury to the abdominal structure. Then next question, the position is given to patient for abdominal paracentesis is option कौन है हमरो supine position, option B lithotomy position, option C Fowler's position, option D knee chest position. तो आर आंसर कौन हम? आर आंसर होची हमरो ऑप्शन सी फाउलस पोजिशन. हमरो एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस रे हमें फाउलस पोजिशन पेशेंट को दे थाउ. तापर हमें जबा नेक्स्ट क्वेश्चन को. द नेक्स्ट, द कॉमनेस्ट साइट फॉर लुम्बार पंक्चर इन एडल्ट इज ऑप्शन है फास्ट लुम्बार वर्टिब्रा, ऑप्शन बी बिटवीन L3 and L4 vertebra, ऑप्शन सी बिटवीन thoracic and lumbar vertebra, ऑप्शन डी बिटवीन lumbar and sacral vertebra. तो आर आंसर कौन? आर आंसर होची हमरो ऑप्शन बी जोटा कि L3 and L4 vertebra. In adult, lumbar puncture is performed below the end of spinal cord, commonly L3 to L4 or L4 to L5. तो এটা হচ্ছে আনসার হচ্ছে আমার L3 and L4 vertebra. Then next question, the position that is provided to the patient for lumbar puncture is supine position, option B prone position, option C C-shaped position, option D L-shaped position. ଆମର lumbar puncture ରେ କୋ position ଦିଆ ହୁଏ? ତ ଆର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର option C ଯୋଉଟା କି C-shaped position ଦିଆ ହୁଏ lumbar puncture time ରେ. Flexing the patient spine into a C shape widen the intervertebral space. Then next, purpose of lumbar puncture include except option को हला to administer spinal anesthesia before surgery, option B to administer medication into the spinal cord, option C to measure the pressure of CSF, option D lumbar irrigation. तो हमारा कौन purpose of lumbar puncture include except. तो आर आंसर कौन हबो? सो आर आंसर कौन? टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन इनटू द स्पाइनल कॉर्ड. अब ये भितर कोटा हुएनी सेटा होची हमर कौन? हमर मेडिकेशन टा डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड रे दिया हुएनी. मेडिकेशन में गिवन इंट्राथिकली इनटू द सीएसएफ और subarachnoid space, not directly into the spinal cord. Then next question, complication that may occur after lumbar puncture, option injury to the spinal nerves and spinal cord, option B infections, option C damage to the intervertebral disc, option D all of the above. तो आर आंसर कौन हम? आर आंसर होची all of the above. lumbar puncture can rarely cause infection, nerve neurological injury or local tissue injury. तो आर आंसर होची हमारा all of the above. Then next question, visualization of the fundus of the eyes is known as ophthalmoscopy, antroscopy, laryngoscopy, bronchoscopy. तो आर आंसर कौन हम? visualization of the fundus of the eye is known as, आर ऑप्शन आंसर होची ऑप्शन ए जोड़ा कि ophthalmoscopy. आर आंसर होची ophthalmoscopy. ophthalmoscopy is used to examine the fundus of the eye. Then next, visualization of maxillary sinus is known as, ऑप्शन है ophthalmoscopy, antroscopy, laryngoscopy, bronchoscopy. तो आर आंसर कौन हम? आर आंसर होची ऑप्शन बी जोटा कि antroscopy. Antroscopy is used for visualization of the maxillary sinus. Then next question, common respiratory problem that may occur during post-operative period is except atelectasis, option B emphysema, option C respiratory depression, option D pulmonary TB. आमर कोटा देखा हुए पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड पर. तो आर आंसर होची ऑप्शन डी पल्मोनारी टीबी. पल्मोनारी टीबी इज नॉट ए टिपिकल इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस शुड बी गिवन टू द पेशेंट आफ्टर रिमूविंग लॉन्ग लेग कास्ट. ऑप्शन है कौन? क्लींस द लेग, ऑप्शन बी एलिवेट द लेग व्हाइल सिटिंग, ऑप्शन सी एक्सरसाइज एवरीडे, ऑप्शन डी रिपोर्ट एनी डिस्कम्फर्ट. तो तुम कौन एडवाइस दवा पेशेंट को जिते तार कौन लॉन्ग लेग कास्टा रिमूव हो सारी. तो तार आंसर होची एक्सरसाइज एवरीडे. रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प रिस्टोर मसल स्ट्रेंथ एंड जॉइंट मोबिलिटी आफ्टर कास्ट रिमूवल.
Then next question, visualization of the abdominal organ through the abdominal wall is known as gastroscopy, laparoscopy, laparectomy, gastrectomy. तो आर आंसर कौन होगा? आर आंसर होची हमर ऑप्शन बी laparoscopy. Laparoscopy permits visualization of the abdominal organ using a laparoscope. Then next question, visualization of the stomach is known as gastroscopy, laparoscopy, laparectomy ना गैस्ट्रोक्टोमी. तो आर आंसर कौन? आर आंसर होची हमर गैस्ट्रोस्कोपी. गैस्ट्रोस्कोपी इज एंडोस्कोपी is an endoscopy examination for stomach and upper GI tract. The next question, visualization of the pelvic organ through the vaginal wall is known as क्लोडोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, हिस्टेरोस्कोपी ना नेफ्रोस्कोपी. तो आर आंसर कौन होगा? विजुअलाइजेशन ऑफ द पेल्विक ऑर्गन इज नोन एज क्लोडोस्कोपी. क्लोडोस्कोपी allows visualization of the pelvic organ through the posterior vaginal fornix. Then next question, visualization of urinary bladder is known as क्लोडोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, हिस्टेरोस्कोपी ना नेफ्रोस्कोपी. तो visualization of urinary bladder is known as cystoscopy. Cystoscopy is used to examine the urinary bladder and urethra. Then next, which of the following is the drug of choice for treatment of enuresis? ऑप्शन कौन है? ऑप्शन क्लोरामफेनिकोल, ऑप्शन बी क्लोमिफेन साइट्रेट, ऑप्शन सी एमिप्रामाइन, ऑप्शन डी ओलेंजापाइन. तो आर आंसर कौन हम? आर आंसर होची ऑप्शन कौन? ऑप्शन सी जोड़ा कि एमिप्रामाइन. एमिप्रामाइन हैज बीन यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ नॉक्चुरल एनुरेसिस. तो आर आंसर होची एमिप्रामाइन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following antiemetic is contraindication in pregnancy? ऑप्शन कौन है? ऑप्शन ए मेटोक्लोप्रामाइड, ऑप्शन बी साइक्लाजाइन, ऑप्शन सी प्रोक्लोरापेराजाइन, ऑप्शन डी डोमपेरिडन. सो आर आंसर होची हमर ऑप्शन डी जोटा कि डोमपेरिडन. डोमपेरिडन इज contraindicated in pregnancy. तो आर आंसर होची ऑप्शन डी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, hazards of oxygen inhalation is option infection, option B atelectasis, option C oxygen toxicity, option D all of the above. तो आर आंसर कौन हम? आर आंसर होची हमर ऑप्शन डी जोटा कि हमर all of the above. prolonged or high concentration oxygen therapy can cause oxygen toxicity and absorption of atelectasis, and oxygen equipment can also contribute to infection risk. तो आर आंसर होची all of the above. Then next question, the procedure that is performed to facilitate removal of the foreign body as secretion that may obstruct the airway. Option A bronchoscopy, option B esophagogastroscopy, option C colonoscopy, option D laryngoscopy. तो आर आंसर कौन हम? आर आंसर होची ऑप्शन ए जोटा कि हमर ब्रोंकोस्कोपी. ब्रोंकोस्कोपी परमिट्स एग्जामिनेशन ऑफ द एयरवे एंड रिमूवल ऑफ द फॉरेन बॉडीज और ऑब्स्ट्रक्शन सिक्रेशन. तो आर आंसर होची ऑप्शन ए ब्रोंकोस्कोपी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, the procedure which is used during esophageal or gastric ulcer is bronchoscopy, esophagogastroscopy, option C colonoscopy, option D fundoscopy. तो आर आंसर कौन हम? आर आंसर होची ऑप्शन बी जोटा कि esophagogastroscopy. esophagogastroscopy allows direct visualization of the esophagus and stomach and helps detect the ulcer. आर आंसर होची ऑप्शन बी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग hazard of oxygen inhalation is bleeding, renal tumor, rectoretinal fibroplasia, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव. तो आर आंसर कौन हम? हमर ऑक्सीजन इनहालेशन ने कौन हो पारे? तो आर आंसर होची रेट्रोरेंटल फाइब्रोप्लासिया. Retrorental fibroplasia, now called retinopathy of prematurity, is associated with oxygen exposure in premature infant. तो आर आंसर होची ऑप्शन सी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, diagnostic aids which is used for diagnosing disease of eye is bronchoscopy, esophagogastroscopy, option C colonoscopy, option D फंडोस्कोपी. तो आर आंसर होची ऑप्शन डी जोटा कि हमर फंडोस्कोपी. फंडोस्कोपी इज यूज्ड टू एग्जामिन द रेटिना एंड ऑप्टिक डिस्क एंड रेटिनल वेसल. देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
The examination of anus to rectum is known as laparoscopy, proctoscopy, cystoscopy ना colonoscopy. सो आर आंसरटा तुम रहा आर आंसर कौन हम निहाती कमेंट बॉक्स रे लिखिए। तो ये क्लास। थैंक यू। आओ चैनल को सब्सक्राइब करदेवे।